ख़ात्मो अची वेंदो ऐं उनजो इहो आहे त जल्द खां जल्द जेको आहे सो इलेक्शन जो ऐलान थियणु खपे। उन सां गॾोगॾु छा सूमर जे ॾियारे ते हाई कोर्ट इस्लामाबाद मां PTI जे सरबराह खे को वॾो रिलीफ मिलण पियो वञे जंहिंजा घणा चांस नज़र बि अची रहिया आहिनि, पर उनजे बावजूदि इमरान ख़ान शायदि ॿाहिरि न निकिरी सघे छाकाणि उन ते ॿिया वधीक केस आहिनि ऐं कुझु केसनि मां उनजी ज़मानत रद्द थियल आहे। तंहिंजे करे मुमकिन आहे तुंहिंजी इन तोशाखाना केस में तुंहिंजी सज़ा शायदि मुअतल थी वञे, पर हू शायदि जेल मां ॿाहिरि कोन निकिरी सघंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणे ते पहुतो। अला भाई। कोका कोला पंहिंजे कंज्यूमर जे लाइ खणी आयो आहे जबरदस्त ऑफर। हाणे हर हफ़्ते तव्हां कोका कोला सां गॾु खटी सघो था 1800 cc कार। सभ खां पहिरियां तव्हांखे ही येलो कैप वारी बोतल ख़रीद करणी आहे। हिन बोतल जे येलो कैप में अंदरि 8 डिजिट्स जो कोड लिखियलु आहे, जेको हेठि ॾिनल नंबर ते तव्हां सभ खां पहिरियां मिस कॉल कंदव। साॻे नंबर तां जेकॾहिं तव्हां ॾे बैक रिंग अचे थी त ही 8 डिजिट जो कोड उते लिखी मोकिलिणो आहे त तव्हां शामिल थी वेंदो लकी कुरानदाज़ी में ऐं हासिल करे सघंदव तव्हां 1800 cc कार। न सिर्फ़ एतिरो, पर इहो ई कोड तव्हां भरिसां के दुकानदार खे ॾेखारे 500 ml जी बोतल बि हासिल करे सघो था। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा ई ऑफर फंटा ऐं स्प्राइट जे लाइ बि आहे, पर उन ते शर्त शराइत लागू आहिनि। सब खां पहिरियां मुकम्मल ॼाण ते बदल ख़बर पूरी ज़िम्मेवारी सां गॾु। अवां जे इशू खे भरपूर नमूने पहुचाईंदासीं आला ऐवाननि ताईं। समाज जे विच में थींदड़ ॾोहनि खे कंदासीं वाउ। मोल इशूज़ जी बि थींदी प्रचार। बिना डपडा जे हर वाक़े खे सिधी रीत पहुचाईंदासीं अवाम ताईं। ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़। धरती फ़क़ति अवाम सां गॾु। रानीपुर में फातिमा फड़ो वाक़े जे मुख्य जवाबदार असद शाह जो रिमांड पूरो थियण ते अॼु कोर्ट में पेश कयो वेंदो। केस दहशतगर्दी टोड़ अदालत खैरपुर मुंतक़िल थियण जा इम्कान। असद शाह जी घरवारी हिना शाह जी अबूरी ज़मानत ख़त्म थियण बाद पुलिस जा मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा। गुज़िरियल ॾींहुं फातिमा फड़ो जी अमड़ शबनम पारां पुलिस वटि बयान रिकॉर्ड कराइण खां पोइ असद शाह जे सोहरे फयाज़ शाह जो नालो बि केस में नामज़द कयो वियो। कानून वारो निगरान वज़ीर उमर सुमरो ऐं सिहत वारो वज़ीर ख़ालिद बिन सईद फातिमा फड़ो जे अबाणे ॻोठ पहुची वारसनि सां ताज़ियत कंदा ऐं केस में हेल ताईं थियल अॻ भराईअ बाबति पुलिस ऑफिसरनि खां ब्रीफिंग वठंदा। अदा छा चवणा तव्हांजो? साफ़ इनके गार गंज ॿीहर ॾींदो छा? इंतज़ामिया के पुलिस के जांच साहब रुगो साफ़ नहीं चयो। कहिड़ो ॾोह कयो? कहिड़ो ॾोह कयो?
साफ़ जे ख़िलाफ़ मां सभिनी जे बारे में नथो चवणु चाहियां उते माना सॼो वीडियो त आहे कोन्हे थोरो माना टुकड़ा टुकड़ा वायरल थियल आहिनि माना जज़्बाती थी वियूं उहा मूंखे पंहिंजी माना ग़लती पशेमानी आहे त तो ग़लति इहो कयो आहे जेको जज़्बाती थी ॻाल्हायो इहो मूंखे पाण खे बि शर्म थिए थो वीडियो ॾिसी करे मूंखे सम्झ में नथो अचे त छा ॻाल्हाए बसि मुंहिंजो इहो मौज़ू न हुयो सभिनी माना साथियुनि खे मां पुछां जेका ख़बर हलायो था असां तस्दीक करे हलाए माना इलाही हुया ग्रुपनि में जेके घटि वधि ॿियनि पीरनि खे साईं आसिफ अली शाह खे गाजुनि खे ॻाल्हाइनि पिया जेको आहे ॾोही उन जे बारे में ॻाल्हाइनि मुंहिंजी शेयर थियल आहिनि पोस्ट रानीपुर में पीर जी औताक ते कठ घुराए फातिमा केस में रंडकू विझण ऐं साफ़िन खे धमकाइण वारे केस में गिरफ़्तार जवाबदार अकबर कल्होड़ो अदालत में पेश 3 ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले जवाबदार अकबर कल्होड़ो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मूं जज़्बात में अची सहाफ़िन ऐं पुलिस ऑफिसरनि खे घटि वधि ॻाल्हायो जंहिं ते हू शर्मसार आहे मुल्क में महांगाई वधी वई हफ़्तेवार बुनियादनि ते महांगाई जी शरह में 0.5% वाध रिकॉर्ड सालियानी बुनियाद ते महांगाई जी शरह में 25.34% इज़ाफ़ो रिकॉर्ड शुमारियात खाते मूजिब खंड बसर थूम बेज़न ऐं दालियुनि समेत ॿियनि आम वाहिपे जी शयुनि जे अघनि में इज़ाफ़ो थियो आम वाहिपे जे ॿारहनि शयुनि जे अघनि में घटिताई थी भारत तरफा सतलुज दरिया में छोड़कर पानी जो रेलो गंडा सिंह वाला में दाख़िल ईंदड़ 10 खां 12 कलाकनि में हेठि गंडा सिंह वारे हंधि पानी जी सतह में वाह जो इम्कान सतलुज दरिया में हेठि इस्लाम ते बि मथां दर्जे जी बोड़ हज़ारे एकड़ फसल पाणीअ हेठि केतिरा ई ॻोठ ॿुॾी विया बोरीवाला में 2 माण्हू ॿुॾी फोत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ और इलेक्शंस विद इन 90 डेज होना चाहिए। हमारी मकसद ये था कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और सेंसस की वजह से इलेक्शन डिले ना हो। हम वाहिद जमात हैं इस वक्त जो पहले दिन से कह रहे हैं कि 90 दिन में होने जिसने कोई मौकिफ तब्दील नहीं किया जिस इशू पे भी बात हुई है अभी पीपल्स पार्टी जो आम चूंडूं 90 ॾींहनि अंदरि कराइण जो मुतालबो नई आदमशुमारी तकरारी करार चूंडूं 90 ॾींहनि खां ॿाहिरि वयूं त आइनी बहरान पैदा थींदो आइन तहत 90 ॾींहं अंदरि चूंडूं थियणु घुर्जनि मुल्क खे बिना जवाज़ आइनी बहरान में न धिकियो वञे चयो वियो हुयो त तकबंदियुनि जे करे चूंडुनि में देर न थींदी हाणे जॾहिं सीटुनि में तब्दीली नाहे थी त चूंडुनि में देर जो को जवाज़ नाहे पीपल्स पार्टी जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जे इजलास बाद शेरी रहमान सैद मुराद अली शाह ऐं नयर बुखारी जी मीडिया खे ब्रीफिंग चयाऊं 29 अगस्त ते इलेक्शन कमीशन सां मुलाक़ात थियल आहे मुलाक़ात जी रोशनी में ईंदड़ सियासी ऐं कानूनी लाहे अमल जो फ़ैसिलो कयो वेंदो मुशावरत सां तइ थियो आहे त नवाज़ शरीफ़ अक्टूबर में पाकिस्तान ईंदो ऐं कानून खे मुंहुं ॾींदो अॻूणे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो लंदन में मीडिया सां ॻाल्हियूं चयाईं पानामा में नवाज़ शरीफ़ जो नालो ई नाहे खेसि साज़िश तहत मुलवज़ कयो वियो अकामी ते कयल फ़ैसिलो बदनतीअ ते ॿधल हो नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ खे जेल में ज़मीन ते सुम्हारियो ऐं जेल में खाधो खारायो वियो जॾहिं नवाज़ शरीफ़ ऐं संदसि धीअ जेल में हुआ तॾहिं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल काथे हो जॾहिं जस्टिस खे नवाज़ शरीफ़ सां पेश आयल वाक़िअनि जी चङी रीति ॼाण आहे खानपुर में प्लाट जे मामले तां ब्रोही बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़े दौरान हिकु ॼणो मारिजी वियो पुलिस एहलकार समेत 13 ॼणा ज़ख़्मी नादराफ़ी सॻियां धुरनि में झेड़े दौरान लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि अशरफ ब्रोही मारिजी वियो झेड़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल लतीफ़ ब्रोही अब्दुल कुद्दूस ब्रोही मोहम्मद यूनिस ऐं ॿिया ज़ख़्मी थिया अस्पताल मुंतक़िल
वडाणी भरसा हथियारबंद पोरियत खे अगवा करे विया। ॻोठ हले बचाओ भुट्टो में नौजवान नूरदीन भुट्टो होटल ते मज़दूरी करण वञी रहियो हो त हथियारबंद खेसि अगवा करे विया। पुलिस ऐं मुखबिन जा वारस धाड़ियलनि जा पेरा खणी कचे तरफ़ रवाना। मियाणी ऐं गुबलो थाणे जी हद में अगवा थियलनि जो अंग वधी छत थी वियो। पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान विच में टी ऐं आख़िरी वनडे मैच अॼु कोलंबो में खेॾी वेंदी। क़ौमी क्रिकेट टीम खे सीरीज़ में 2-0 जी बरतरी हासिल। टी मैच में कामयाबी मिलण जी सूरत में पाकिस्तान वनडे जी आलमी रैंकिंग में पहिरीं पोज़ीशन माणे वठंदो। क़ौमी टीम ऐं ॿिनि तब्दीलियुनि जो इम्कान। सऊद शकील खे प्लेइंग 11 में शामिल करण जो फ़ैसिलो। फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़ ऐं मोहम्मद वसीम खे बि मौक़ो मिली सघे थो। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौज़िया एजाज़ ऐं दुआ भुट्टो। नास्टीन हेडलाइन सां ॾिठियूं त अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर कंदासीं। फातिमा फड़ो क़त्ल केस में मुख्य जवाबदार असद शाह खे अदालत में रिमांड लाइ पेश कयो वियो। पुलिस असद शाह जो 5 ॾींहनि वारो रिमांड पूरो थियण ते सख़्त पहिरे हेठि अदालत आंदो। फातिमा फड़ो जी अमर शबनम फड़ो बि अदालत में पहुची वई आहे। नाज़रीन अवां खे अपडेट ॾियूं पिया फातिमा फड़ो वारे वाक़े बाबति। फातिमा फड़ो क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार असद शाह खे अदालत में रिमांड लाइ पेश कयो वियो। पुलिस असद शाह जो 5 ॾींहनि वारो रिमांड पूरो थियण ते सख़्त पहिरीं हेठि अदालत आंदो। फातिमा फड़ो जी अमर शबनम फड़ो बि अदालत में पहुची वई। अवां खे अपडेट ॾियूं पिया नाज़रीन फातिमा फड़ो केस बाबति। फातिमा फड़ो क़त्ल केस मुख्य जवाबदार असद शाह खे अदालत में रिमांड लाइ पेश कयो वियो आहे। पुलिस असद शाह जो 5 ॾींहनि वारो रिमांड पूरो थियण ते खेसि अदालत में पेश कयो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। गुलशन लाइन ते मौजूद आहे। जी गुलशन, आगाह कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि अवां वटि? मां ॿुधाईंदो हलां त फातिमा केस जो मुख्य जवाबदार पीर असद शाह जो 5 ॾींहनि वारो रिमांड पूरो थियण ते पुलिस जे सख़्त पर हेठि असद शाह खे अदालत में आंदो वियो आहे। मां ॿुधाईंदो हलां त फातिमा फड़ो जी अमड़ शबनम फड़ो बि अदालत में पहुची वई आहे। मां खे इहो ॿुधाईंदो हलंदुसि त अदालत जी का कार्रवाई आहे उहा अञा ताईं शुरू न थी सघी आहे। इहा अदालत जी कार्रवाई जेका शुरू थींदी उन खां बाद में ख़बर पवंदी त असद शाह खे अॼु जेको आहे सो वधीक रिमांड ॾिनो पियो वञे या हुनखे जेल मोकिलियो पियो वञे। जॾहिं त इन साॻी केस में 2 जवाबदार जेको आहे सो पीर फयाज़ शाह ऐं उनजी धीउ जेको आहे सो हिना शाह उहे जेको आहे सो अञा ताईं गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि, इहे अदालत में पेश थी सघिया आहिनि। जी ठीकु आहे गुलशन जी महिरबानी। अहम ख़बर आहे नास्रीन अवां खे आगाह कंदासीं। राणीपुर खां राणीपुर में फातिमा केस में रंडक साफ़िन खे धमकियूं ऐं पुलिस ते रिश्वत वठण वारे केस में गिरफ़्तार जवाबदार रिमांड ते पुलिस हवाले कयो वियो आहे। पुलिस जवाबदार अकबर कलोड़ो खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई आहे। अदालत जवाबदार अकबर कलोड़ो खे 3 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस जे हवाले करे छॾियो। वरी ॿीहर असां राब्तो कयो आहे गुलशन चांडियो सां। जी गुलशन, आगाह कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी गुलशन जी बिल्कुलु मां ॿुधाईंदो हलां त पीर जी औताक ते कठ घुराए फातिमा केस में रंडकूं विझण ऐं साफ़िन खे धमकाइण पुलिस मथां रिश्वत जा इल्ज़ाम हणंदड़ जवाबदार अकबर कलोड़ खे राणीपुर जी अदालत में पेश कयो वियो आहे। अदालत सॻोड़े जवाबदार अकबर कलोड़ खे 3 ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो आहे। जवाबदार अकबर कलोड़ो साफ़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मां जज़्बात में अची साफ़िन ऐं पुलिस ऑफिसरनि खे घटि वधि ॻाल्हायो, जंहिं ते मां शर्मसार आहियां। साफ़िन ऐं पुलिस ऑफिसरनि खां माफ़ी वठां थो, जॾहिं त साफ़िन ऐं पुलिस ऑफिसरनि खे धमकियूं ॾींदड़ जवाबदारनि जी जेका वधीक गिरफ़्तारी जा जेके आहिनि पुलिस पारां छापा जारी आहिनि। जी ठीकु आहे गुलशन, अवां जी महिरबानी।
गवर्नमेंट का ख़बर अवां खे ॾींदासीं। कानून वारो निगरान वज़ीर उमर सुमरो ऐं सिहत वारो वज़ीर ख़ालिद बिन साद अॼु फातिमा फड़ो जे ॻोठ पहुची ताज़ियत कंदा। निगरान सूबाई वज़ीरनि खे पुलिस ऑफिसरनि फातिमा फड़ो केस में थियल अॻ भराई बाबति आगाही ॾींदा। लीगल एड कमेटी तरफ़ां सीनियर वकील सफ़दर कनासरो फातिमा जी अमर सां गॾिजी अदालत में वकालतनामो जमा कराईंदो। न्याणी फातिमा फड़ो क़त्ल केस दहशतगर्द टोड़ अदालत ख़ैरपुर मुंतक़िल थियण जो इम्कान आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, आग कनासी अवां खे गंबट खां कानून वारो निगरान वज़ीर उमर सुमरो ऐं सिहत वारो वज़ीर ख़ालिद बिन साद अॼु फातिमा फड़ो जे ॻोठ पहुची ताज़ियत कंदा। निगरान सूबाई वज़ीरनि खे पुलिस ऑफिसरनि फातिमा फड़ो केस में थियल अॻ भराई बाबति आगाही ॾींदा। लीगल एड कमेटी तरफ़ां सीनियर वकील सफ़दर कनासरो फातिमा जी अमर सां गॾिजी अदालत में वकालतनामो जमा कराईंदो। न्याणी फातिमा फड़ो क़त्ल केस में दहशतगर्द टोड़ अदालत ख़ैरपुर मुंतक़िल थियण जो इम्कान आहे। नाज़रीन, ख़बर अवां खे ॾियूं पिया गंबट खां कानून वारो निगरान वज़ीर उमर सुमरो ऐं सिहत वारो वज़ीर ख़ालिद बिन साद अॼु फातिमा फड़ो जे ॻोठ पहुची ताज़ियत कंदा। निगरान सूबाई वज़ीरनि खे पुलिस ऑफिसर फातिमा फड़ो केस में थियल अॻ भराई बाबति आगाही बि ॾींदा। इन जा वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। गंबट खां धरती टीवी न्यूज़ रिपोर्टर अजीब लाखो लाइन ते मौजूदु आहे। अजीब लाखो, कानून वारो वज़ीर उमर सुमरो ऐं सिहत वारो निगरान वज़ीर ख़ालिद बिन साद अॼु फातिमा फड़ो जे केस में ॻोठ पहुचंदा। वधीक अपडेट कजो। जी, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त राणीपुर में पीराणी गादी अंदरि पेश आयल अफ़सोसनाक वाक़ियो जंहिंमें मौसूम न्याणी फातिमा फड़ो वहशत सां दहशत जो निशानो बणिजी क़त्ल थी चुकी, जंहिंजे ॻोठ अबाणे अली मोहन फड़ो अॼु सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद उमर सुमरो ऐं सिहत वारो वज़ीर ख़ालिद बिन साद फातिमा फड़ो जे अबाणे ॻोठ अली मोहम्मद फड़ो पहुची संदसि अबे नदीम ऐं अमर शबनम सां ताज़ियत कंदा ऐं तफ़सील वठंदा। उन दौरान DIG सखर तरफ़ां जेका JIT जोड़ियल आहे उहा ॿिन्ही सूबाई वज़ीरनि खे फातिमा फड़ो वाक़े में थियल अॻ भराई ऐं हक़ीक़तनि मुतालिक़ आगाही पिणु ॾींदी। जॾहिं त हिन केस में जेको कमेटी जुड़ियल आहे लीगल एड कमेटी, उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हीउ केस जेको आहे ATC में वेंदो। ATC में उन सेक्शन तहत वेंदो फातिमा फड़े वाक़े सबबि राणीपुर ऐं आस पास जे इलाइक़नि में ख़ौफ़ ऐं हिरास छायल आहे। ख़ौफ़ ऐं हिरास जेको आहे उहो ATC जे ज़मरे में अचे थो ऐं उहो ATC जो केस आहे उहो इंसाए दहशतगर्द कोर्ट वञण जा इम्कान आहिनि। अॼु उन्हनि जा फरियादी केस जा जेका आहिनि शबनम उहे जॾहिं 164 कंदा त उन में उन लफ़्ज़नि जो वर्जाउ कयो वेंदो, जंहिंखां पोइ हीउ केस ऑटोमेटिकली ATC कोर्ट जो केस थी वेंदो ऐं ATC कोर्ट में हीउ केस मुंतक़िल थी वेंदो ऐं वकील इहा बि दरख़्वास्त ॾींदा अदालत खे त हिन केस में सेक्शन ATC जा हणी करे ऐं ATC कोर्ट खैरपुर रवानो कयो वञे। जी ठीकु आहे अजीब लाखो, वॾी महिरबानी अपडेट ॾियां। ही हुई हिन वक़्त जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स ॾिसंदा रहो धरती TV न्यूज़। कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। The power is here. यूनिक ऐं अवां हमेशा जो साथ। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। The power is here. यूनिक ऐं अवां हमेशा जो साथ। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से।
कोका कोला पंहिंजे कंज्यूमर जे लाइ खणी आयो आहे हिकु ज़बरदस्त ऑफर। हाणे हर हफ़्ते तव्हां कोका कोला सां गॾु खटी सघो था 1800 सीसी कार। सभ खां पहिरियां तव्हांखे ही येलो कैप वारी बोतल ख़रीद करणी आहे। हिन बोतल जे येलो कैप में अंदरि 8 डिजिट्स जो कोड लिखियलु आहे, जेको हेठि ॾिनल नंबर ते तव्हां सभ खां पहिरियां मिस कॉल कंदव। साॻे नंबर तां जेकॾहिं तव्हां ॾे बैक रिंग अचे थी त ही 8 डिजिट जो कोड उते लिखी मोकिलिणो आहे त तव्हां शामिल थी वेंदो लकी कुरानदाज़ी में ऐं हासिल करे सघंदव तव्हां 1800 सीसी कार। न सिर्फ़ु एतिरो, पर इहो ई कोड तव्हां भरिसां कंहिं दुकानदार खे ॾेखारे 500 ml जी बोतल बि हासिल करे सघो था। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा ई ऑफर फंटा ऐं स्प्राइट जे लाइ बि आहे, पर उन ते शर्त शराइत लागू आहिनि। पाकिस्तान पाकिस्तान का बाहर जिते जिते वहीदा अबड़ो जो आवाज बुधो वने तो जिते जिते मुझे प्यारो धरती टीवी डिठो वने तो उन्हनि के वहीदा चांदी पंहिंजे प्रोग्राम में खुशामदीद भली कार है। इन उम्मीद सां पंहिंजे प्रोग्राम के बाक़ायदा सां स्टार्ट कंदासीं त तव्हां जिते बि हूंदो ख़ुशि हूंदो अल्लाह जी अमान में हूंदो ऐं पंहिंजे प्यारनि सां घर वारनि सां ओड़े पाड़े वारनि सां। ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे, हमेशह पंहिंजी ज़िंदगी सां प्यार करणु खपे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी सां जेसिताईं तव्हां इंसान प्यार न कंदो तेसीं ताईं इंसान कंहिंसां बि प्यार नथो करे सघे। छो त तव्हांजी ज़िंदगी जेकी आहे उहा तव्हांखे अहसासु ॾियाराईंदी आहे त जेके तव्हांजे इर्द गिर्द माण्हू रहनि था उहे बि ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि। जॾहिं इंसान पंहिंजो पाण सां प्यार कंदो त दुनिया जी हर शइ तव्हांखे ॾाढी ख़ूबसूरत लॻंदी आहे, मख़लूक ॾाढी ख़ूबसूरत लॻंदी आहे, गुल ॾाढा ख़ूबसूरत लॻंदा आहिनि। ऐं जॾहिं इंसान पाण मुरझाइजी वेंदो आहे, पाण थोरो ॾुख में हूंदो आहे, तकलीफ़ में हूंदो आहे, पोइ दुनिया जी हर शइ जेकी आहे उहा बेमज़ा लॻंदी आहे, बेज़ाइका लॻंदी आहे। त हमेशह पंहिंजी ज़िंदगीअ खे ख़ूबसूरत बणायो। कॉलर में था कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरु पिया ॻाल्हायो? नियाज़ जो लाखणे को। नियाज़ कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? दुआ शुक्र आहे ख़ैर आहे सफ़ा। कीअं भई ज़िंदगी गुज़रे तव्हांजी? अॼु जो ॾींहुं कीअं गुज़रियो तव्हांजो? सफ़ा सुठो। जुमे जो ॾींहुं भलारो ॾींहुं भलाई थी वई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुमे जो ॾींहुं असांजे लाइ जेके बि असां मुस्लमान आहियूं असांजे लाइ सम्झो त ईद जो ॾींहुं हूंदो आहे। ॾाढो ॾाढो ज़बरदस्त ऐं ॾाढो ॾींहुं आहे, भलाई आहे। बिल्कुलु ॾाढो ॾाढो सुठो ॾींहुं आहे। इन ॾींहं ते जेकॾहिं को हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो हूंदो आहे जंहिंमें असांजी दुआ क़बूल बि थींदी आहे। त असां मुस्लमाननि जे लाइ अलाह साईं हिकिड़ो इहो बि हिकिड़ो ॾाढो बहितरीनु ॾींहुं रखियो आहे न। अच्छा, छा ॿुधाईंदव तव्हां? असां हिकिड़ो शेर ॿुधाईंदासीं। हिकु शेर हुयो जंगल में जी। जंगल मंगल। जंगल में शेर ने मंगल कर दिया जी। चए थो त जे साम्हूं अचे थो त ताबिश थी मारे, लिखी थो त ॻोल्हा जी ख़्वाहिश थी मारे, जे कावड़ करी थो त कावड़ कोहे थी, जे पर्ची पवी थो त नवाज़ थी मारे, अखियुनि ते बि मदोश इल्ज़ाम धर तूं, अखियुनि खे बि दिल जी साज़िश थी मारे, दिल जी सिफारिश थी मारे। न अखियुनि खे बि इल्ज़ाम मदोश धर न तूं, अखियुनि खे बि दिल जी सिफारिश थी मारे। दिल जी सिफारिश इंसान खे माराईंदी आहे। सही था जवाब। अच्छा, ॿियो ॿुधायो, ॿियो छा चवणु चाहींदो? को मैसेज ॾियणु चाहींदो जेके तव्हांखे स्क्रीन ते ॾिसनि पिया? मैसेज इहो आहे त सभिनी खे अलाह साईं ख़ुशि कंदो, सभु ख़ुशि हूंदा, बसि भलाई अलाह कंदो। सभिनि सां तव्हां कोशिशि कयो त पुॼी सघे था, त कंहिंसां चङाई कयो, बुराई न कयो त बहितर आहे। अच्छा, न्याज़ अक्सर उदास जॾहिं थींदो आहे अकेलाई में वेही करे अलाह साईं खां कहिड़ी दुआ घुरंदो आहे? बसि इहा ई त सिहत तंदुरुस्ती हुजे। बिल्कुलु, सिहत त वॾी नेमत आहे। हा, सिहत तंदुरुस्ती हुजे। सिहत खां वधीक ॿी शइ कोन्हे का बि शइ तव्हां वटि न हूंदी, सिहत हूंदी सभु कुझु थी वेंदो। सिहत न हूंदी त कुझु शइ हूंदी त बि तव्हां परेशान थींदा। बिल्कुलु सही था चओ, बिल्कुलु सही था चओ। घणा माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन वटि अलाह साईं उन्हनि खे एतिरो ॾिनो आहे, हद खां वधीक ॾिनो आहे, पर उन्हनि वटि सिहत न आहे त माना उहो सभु कुझु उन्हनि जे के माना नथो रखे न। करोड़े रुपया माण्हू आहिनि, उहे आहिनि, कोई बि का बि शइ आहे जेका तव्हां जिस्मानी आहे, ॿिए को वठे उनखे ॾींदो तव्हां त हीअ शइ ॾे त हेतिरा पैसा वटि चवंदो, कोई बि चवंदो न बाबू मां न ॾींदुमि। सही ॻाल्हि आहे। ईअं आहे न, बसि अलाह सिहत रखे उहो ई कंदो भलाई। इंसान जी नियत साफ़ हुजे, मुराद हासिल आहिनि न। बिल्कुलु सही था चओ, बिल्कुलु सही था चओ। उहा ई भलाई कंदो, अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो, ख़ुशि हूंदो तव्हां। थैंक यू सो मच, वॾी महिरबानी न्याज़, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। थैंक यू सो मच। ऐं वाक़ई में सिहत जेकी आहे उहा वॾी नेमत आहे। इंसान वटि जंहिं वटि सिहत आहे उहो दुनिया जो सभ खां अमीर इंसान आहे। पंहिंजी सिहत जो घणो ख़्यालु रखंदा कयो। घणा माण्हू घणियूं शयूं जेके आहिनि जेके असांजी सिहत लाइ नुक़सानदेह हूंदियूं आहिनि पर असां खाई वेंदा आहियूं, असांखे
ख़बर बि हूंदी आहे त हीअ शइ जेकी आहे उहा असांजे लाइ नुक़सानदेह पर इंसान चवंदो अलाह साईं करे पर अलाह साईं चए थो त जेको अकुलु तव्हांखे ॾिनो आहे त थोरो अकुल खे बि इस्तेमालु कयो। कॉलर मौजूदु आहे, कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरु पिया ॻाल्हायो? जी जी अली। हाँ अल्लाह ताला जो शुक्र पंतन पाक जो मेहरबानी। माशाअल्लाह। कीअं गुज़रियो अॼु को ॾींहुं तव्हांजो? जुमे जो ॾींहुं हो ज़ाहिरी सुठो ॾींहुं हूंदो, बहितरीन ॾींहुं आहे। बहितरीन ॾींहुं आहे, सत्संग जो ॾींहुं आहे। बिल्कुलु ॾाढो सुठो ॾींहुं आहे। अच्छा अॼु जी मसरूफ़ियत छा रही? अॼु को सुठो कमु कयो जुमे जे ॾींहं ते? जुमे जे ॾींहं ते अॼु पहिरियों भेरो दुकान बंदि थियो। सही। अच्छा छा ॿुधाईंदो तव्हां असांखे? गानो ॿुधाईंदुमि पर सवाल कोन्हे। न तव्हां सवाल अॼु तव्हां ॿुधायो, अॼु टॉपिक रखूं था जेको तव्हां ॿुधाईंदव। न असां न ॿुधाईंदासीं। तव्हां न ॿुधाईंदव? ठीकु आहे। छा ॿुधाईंदव तव्हां? मां गानो ॿुधाईंदुसि, दोस्तनि जा नाला खणंदुमि। जी। गोलेवाल शदातपुर खां हाजी शरीफ बख्शी, नवाब खोसो कुबे सईद खान खां वॾा गोसाऊं खां ॾाढो चांडी, कंबर खां जबगुल बलोच, रेलवे स्टेशन कंबर खां उस्ताद ज़िलन मस्तोई जुनेद बुर्डो, लश्करी चांडिया कंबर खां उबली सोनो चांडियो ऐं कलराई मोले कंबर खां। Divorce itself from North America. No, it's not possible. And we are sane enough, we are rational enough to engage in this relationship. We feel all positivity towards it. Does not mean that everything America does or American thinks we agree with. Of course, we have very healthy disagreement on variety of issues. Our outlook for the region, our global outlook, it has convergence of interests also, and at times there is divergence of interest also, like any other nation. You know, the areas I feel where we have commonality, it's the climate change. I've been constantly telling my team that it should be now part of our national security policy. It's becoming an existential threat to every nation state, not just Pakistan. Though we are the biggest victim of climate disaster, I'm sure everyone is aware of the floods we experienced last year in my province, from where I come from, Balochistan, and our adjacent Sindh. And there are other areas. The unification of America out of the Civil War, the Southerners and the Northerners, and the way it has created its federation, it has a lot of lessons, political lessons, administrative lessons for Pakistan too. So we see United States as a big power, but at the same time we want to see it to turn itself into a great power. So it's not essential always that it would be great if it is big. And we want to partner that journey of greatness along with that. Our common human values. We primarily believe in inclusiveness. We borrow the terms, I've been constantly coining it for the last 10 days and talking about a Pakistani dream. So primarily I took it from American dream. Pursuit of happiness, you know, all the right American values. Diversification. The kind of diversification you experience in the United States of America, it's hardly seen anywhere else in the world. It's tolerance. It has its own challenges. I'm not trying to portray as it's a small component of heaven. It's still part of the earth, and it has all the earthly ills. But at a larger scale, the society is very tolerant. Then what they have produced in the last 200 years in the realm of knowledge and skill, it's amazing. Who could have thought in 17th century that there would be places like
Berkeley and Yale and Columbia and Boston and Harvard, but they've done it in just 2 centuries. So the rest of the world has it to be envious of the United States, or it has to learn and benefit from it. So we do not believe in that irrational negative energy which has hysterical responses towards countries, towards societies, towards nations. I would like, and I personally believe, that we have a very healthy, engaging, and positive sort of vibes towards the United States of America. And we've got a history for that. Don't forget that we are the country. There would be people who would be telling you that, oh, OBL was recovered from Pakistan. Don't forget that the capitalist system's frontline state was Pakistan. The entire GDP of the Western Hemisphere, probably it is 20, 30, or 40 trillion dollars. It is preserved because we fought a war with Engels and Marxist ideas, where the Soviet regime, along with the whole of the Eastern Europe, was giving and demonstrating an alternate political system and economic system. If we wouldn't have fought from 1979 to 1989, the $30 trillion of the capitalist economy probably wouldn't have been there. We contributed towards that. I'm not taking the entire credit for it, but we were in the forefront. But I feel at times we fail to articulate what have we contributed towards the global peace, towards the global security, towards the global economic and financial institutions, which are now religiously followed everywhere in a very sacrosanct manner. We have contributed towards the establishment of all those systems. So that's how I see, or we see, I is the wrong pronoun, because I represent at the moment the entire state of Pakistan. I see it in a very positive light. Yes. I'm a first-generation Palestinian American from Chicago. And one thing that you actually just reminded me of in your mention of socialism and socialistic values is income inequality, which my country, the U.S., deeply suffers from, and I think we're witnessing like deep fractures in our unity and like core values that make America America. And one thing that I recognized in my travels to Islamabad from the war was some of those same issues are present in Pakistan. I think have been on the rise over the last couple of decades pretty dramatically. And so I'm wondering what you think has been the vision for the common man in Pakistan, and what strategies and policies has the government of Pakistan pursued, and maybe what lessons can other people in other nations learn from that? Let me briefly respond to that. Look, our 7 decades of existence, we had a lot of challenging times. We are living in a political milieu where the 2 greatest military mights which are documented in human history, one was Soviet Empire and the second was the alliance of US and NATO and ISF forces. They came in this region and remained here respectively for each for 10 years. So it has implications, it has a lot of implications for generally for our society, and at the same time in the manner our state building institution or nation building project, if we could call it a project, it has responded in this environment, and many external realities have shaped our choices, in which at times our democratic dispensation has been on discontinuation, sometime our priorities to deliver to a common man, to which you are referring, has been
out of context. Our priority list has reversed. Our spending spree has been on issues which has been of utmost importance to us, in which the existence, the political, economic, and other social rights of a common man has not been on priority. What does that mean? That we lack vision? No, this is not the case. We do have a vision, and we are trying to express and realize those vision in the greater value system on the basis of which this country was created. Two countries craved themselves out of religious inspiration or ideas, at least in modern history. One is Pakistan in 1947 and the other is Israel in 1948. And both, they have taken altogether different courses, and they have different destinies, different circumstances. We are here with the population. Over there, it's at a very demographically at a disadvantaged position. Numerically, they are not that much. But both live in an environment where the security imperative has been of utmost importance. If you closely, you delve in and you dig out, again I would say these external factors were determining our choices. I personally feel we are settling down. We are in, the dust is settling down, and the common man is becoming the nucleus and the entire idea of the relationship between state and citizen. We are transforming towards that. The ideal is that we develop that social contract, we express that social contract in which the rights and the responsibilities of the citizens are ensured, and vice versa. The state should also have its own rights and responsibilities. So it's a two-way, it's a dual carriageway. It has to come both ways. And I don't know whether I'm using the correct analogy or not, but that's how the modern nation states, I think so, are surviving, are improving, and delivering. I hope once you come next, whenever it is, and I hope it is soon, you will start feeling the changes in that direction. My name is Osama Qureshi. I'm from Harvard Business School. So I'm one of the few who plan on flying the next day back to Pakistan right after graduation. So my question, of course, with that background would be about the financial policy. I've been following Pakistan's financial position in the recent times. Luckily, we were able to secure the IMF thanks to the team efforts. I think Mr. Sadar did a great job in negotiating that. But then again, like, how many times do we have to go to IMF? How many times do we have to go to external sources out there? I just have a question to you about your next, couple of months, couple of years. May your tenure be a great sign for Pakistan's financial success. How do you plan, or what are your plans regarding the structural reforms when it comes to rebuilding Pakistan and bringing Pakistan back on that track where our forefathers, once lived in, and where our children will be proud of living in a nation, and we will be proud of being a self-sustainable nation? Well, inshallah, I'm pretty much certain that you will be proud of yourself and your forefathers and the values they believed in and they represented. In short, IMF, I wonder why it is being treated as foe. It's not a foe. Neither is it a friend. The real foe is our expenditure habit and the way we generate revenue. So if we want to survive as a society and a state, we have to alter both. Rationalize our expenditure the way we govern these people and
we have to change our ways. How do we generate revenue? We are a country whose tax ratio to its GDP is around 9%. So if 9% of the people are contributing towards that huge gross domestic product, so what would be our economic and financial situation? So how do you do that? We are trying to contribute in our limited stint, which we understand it's a constitutional order and it would be there for a few months. How to bring non-documented economy and enhance the tax network. That is the answer. This is one. How do we invest in our human resource? Do we manufacture goods or do we develop our individuals and sell services? So these are. कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। The power is here. यूनिक एंड अहा हमेशा जो साथ। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। The power is here. यूनिक एंड अहा हमेशा जो साथ। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। कोका कोला पंहिंजे कंज्यूमर जे लाइ खणी आयो आहे हिकु ज़बरदस्त ऑफर। हाणे हर हफ़्ते तव्हां कोका कोला सां गॾु खटी सघो था 1800 सीसी कार। सभ खां पहिरियां तव्हांखे ही येलो कैप वारी बोतल ख़रीद करणी आहे। हिन बोतल जे येलो कैप में अंदरि 8 डिजिट्स जो कोड लिखियलु आहे, जेको हेठि ॾिनल नंबर ते तव्हां सभ खां पहिरियां मिस कॉल कंदव। साॻे नंबर तां जेकॾहिं तव्हां ॾे बैक रिंग अचे थी त ही 8 डिजिट जो कोड उते लिखी मोकिलिणो आहे त तव्हां शामिल थी वेंदो लकी कुरानदाज़ी में ऐं हासिल करे सघंदव तव्हां 1800 सीसी कार। न सिर्फ़ एतिरो, पर इहो ई कोड तव्हां भरिसां के दुकानदार खे ॾेखारे 500 ml जी बोतल बि हासिल करे सघो था। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा ई ऑफर फंटा ऐं स्प्राइट जे लाइ बि आहे, पर उन ते शर्त शराइत लागू आहिनि। Back home, the problem is it is not being realized that this is a two-way partnership. We should focus more on that, more producing skilled, semi-skilled, high-tech. It is an era of AI and the rest. So we need to put in more into our human resource. One of the very famous couplet of Iqbal, I'm sure you can translate it to the rest of your colleagues who are American Americans. Well, you're all American Americans, but I'm just saying it on lighter note. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. It's a couplet of our national poet in which he expresses that the destiny of the nation is collectively in the hands of people. And each and every individual is like a star towards that destiny. So this has been said around 100 years back when there was no concept of human resource development. But he hinted towards the human resource development, that everyone amongst these people are stars. And these stars can lead us towards a very bright future. They are the one who would be enlightening us, who would be guiding us, who would be telling us, who would be inspiring us. And I'm sure a few amongst them are sitting under this roof. And inshallah, people will contribute, and I'm very much certain that we will get out of this quagmire. It's a message of hope. There was a time when the Israelis faced a financial crunch, and the inflation rate in the late 70s in Israel was around 1,000%. But they sat there, they put in the right policies,
They focused on recovering their economic woes, and they did it. And I'm sure we're going to do not just that, but we're going to do better. Yes, please. Yeah, you. My question is regarding the future of democracy in Pakistan. As is evident from our history, we've experimented with different kinds of political systems, and they've not always been successful. For the past 2 to 3 terms, we've been a democratic country, but in the 7 decades that we've been free, there has not been a single democratic government that has completed a term. But when we look at our neighboring country, India, they have a thriving democracy. What do you think is the future of democracy in Pakistan, and when can we expect a government that would actually complete its term? Well, first of all, the completion of tenure of any government is not, or incomplete completion of the tenure of a government is not at all undemocratic. The democracy gives guarantee to the strength of the parliament. And in Pakistan's case, last 15 years, post-2008, we had 3 successive complete stints of parliament. And in Westminster model of democracy, you do change the governments through parliament, through constitutional means, and that has been the case in Pakistan. In order to avoid purge and a coup, you have to agree on this principle that the members of the parliament has the inherent right to emplace a government or replace a government. So I have not seen any act in last 15 years where the case has been otherwise. Secondly, to the broader question of what is the future of democracy in Pakistan, the bigger question is what is the future of democracy at a global scale? And there are scholars back in West also, many of you probably would have read how democracies die. One should read that, one should learn through that. And there is another reference of Shirley Brahman. She teaches at Columbia. It's a case study where some 20 countries or 10 countries have been picked from Western Europe, and 300 years of democratic experience has been documented, and how the dictatorships have been morphed into democracy. It's a very interesting read. People like yourself, you must go through that. And in that you do realize that democracy is a process, not an event. And how does the German unification occurred? How does the English experiment occurred? How does the Spanish experiment occurred? How does the Italian experiment occurred? It's a guide for the transitional democracies. And then when you generate the conversation about democracy, there's a very important angle that you want to create a liberal democracy or an illiberal democracy. Yes, in our neighborhood, the ritual of democracy is being exercised for last 7 decades. But is it heading towards electoral autocracy? That is the question which needs to be focused more. And is it leading towards liberal democracy or an illiberal democracy? But is it this kind of democracy you would envision and you would want to have for United States of America? Fair enough. Or United Kingdom or France? Is this the old principle of laissez-faire, the French secular constitutional principles? I don't think so. So bringing it back to our region and then to our country, we are committed and we understand that the performance and participatory idea of democracy is what is needed. We would encourage that, we would try to realize that, but at the same time,
when you have to strike a balance, there is a rule of law and then there is a rule of order. That social order can never ever be compromised for a rule of law. Sometimes, there are many scholars in the world which tells you that you have to operate in the law while outdating the law, when you would be operating in emergency laws. It's a wholesome idea, it's an entire discipline which is being taught in different universities, that when there are extraordinary situations, how does the normal law operates? In Pakistan's context and in our experience, there are times where the normal laws get suspended, or the normal laws are not fully implemented, or the normal laws are not solution to the kind of challenges we face, like our security challenge. Where do you think that if we would have applied our normal policing laws, we would have countered suicide bombings, which, by the way, have happened in thousands of numbers? Of course not. So then the priority is that first you secure life. When you secure life, you secure social and political order, then later on you go for the issues of civil liberties, democratic principles, so on and so forth. So you have to strike a balance. And the entire arrangement of the universe, to be honest with you, if I observe it and if I try to comprehend it and want to express it in one single word which can reflect its basic principle of existence, and that is balance. It works on the principle of balance. You cannot just take an extreme position on anything. Whatever I am saying is still challengeable. All I'm trying to do is stimulate the thought process, and you try to look at it with another perspective as well. You may learn something from it, or you at least, it would lead you to explore further something, and you will delve in, and you may learn something new which has not even come out from me. So कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। The power is here. यूनिक एंड हमेशा जो साथ 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना ईटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना ईटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। The power is here. यूनिक एंड हमेशा जो साथ। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। कोका कोला पंहिंजे कंज्यूमर जे लाइ खणी आयो आहे हिकु ज़बरदस्त ऑफर। हाणे हर हफ़्ते तव्हां कोका कोला सां गॾु खटी सघो था 1800 सीसी कार। सभ खां पहिरियां तव्हांखे ही येलो कैप वारी बोतल ख़रीद करणी आहे। हिन बोतल जे येलो कैप में अंदरि 8 डिजिट्स जो कोड लिखियलु आहे, जेको हेठि ॾिनल नंबर ते तव्हां सभ खां पहिरियां मिस कॉल कंदव। साॻे नंबर तां जेकॾहिं तव्हां ॾे बैक रिंग अचे थी त ही 8 डिजिट जो कोड उते लिखी मोकिलिणो आहे त तव्हां शामिल थी वेंदो लकी कुरानदाज़ी में ऐं हासिल करे सघंदव तव्हां 1800 सीसी कार। न सिर्फ़ एतिरो, पर इहो ई कोड तव्हां भरिसां के दुकानदार खे ॾेखारे 500 ml जी बोतल बि हासिल करे सघो था। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा ई ऑफर फंटा ऐं स्प्राइट जे लाइ बि आहे, पर उन ते शर्त शराइत लागू आहिनि। Hardly see it in negative terms when the young people are going towards the Western Hemisphere, trying to grab opportunity over there, trying to prove themselves. Their individuality shines over there. It has to offer so much in terms of opportunity. Why do I have to take it as a challenge? I think so I should be encouraging it.
I should be promoting it. I should be supporting it. It is a skewed angle where people talk about it and they say that, oh, people are living out of despondency. You may be not that comfortable or happy about a situation back home, that's fine. And even if that is one reason of exercising that choice to leave this country, probably is minimal. Is this for the first time that the youngsters are leaving Pakistan? Of course not. We've been leaving this country since 1947. Every month, every year, every decade, people go. How is it a new phenomenon? It's a normal phenomenon. For me, it's pretty much normal. And whosoever wants to come back is very much welcomed. It is an individual choice which should be supported either way. You become an effective and contributor as an individual, either you are here or in your home of choice. This is your natural home, that becomes your home of choice. For me, the more important thing is that wherever you are, you should be successful. You should realize the full potential of your talent. You should reach the zenith of any profession you choose. That is more important to me. If you are a redundant, non-productive individual, either home or abroad, that is a challenge. And that is a huge challenge. So let's bring the conversation into its right spirit, into its right angles, and you could contribute to that larger, bigger and huge conversation. Let's talk sense instead of just responding historical towards that, being historical towards that. Indians went in 1960s to US and rest of the Western Hemisphere. Everyone called that a brain drain, that, oh, the people have left and they have said, who's going to run India? And after 30 or 40 years, the whole of that lot has returned as brain asset. They earned capital, they developed expertise. So if there would have been a negative relationship between that projected Indian diaspora and back home their governments, what sort of relations they would be having? I mean, there are challenges still between that community and the governments both. There would be issues with us as well. But at a larger scale, a potent individual is beneficial anywhere on the planet. Thank you so much for being here. Thank you so much for seeing a new or at least different face of Pakistan. And I'm sure all of you would be our public ambassadors. Thank you so much. निगरान वजीर आजम कोका कोला के साथ टिपिकल टॉक 2 प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां सौराब सुमरो। असां वटि मुख़्तलिफ़ किरदार ईंदा आहिनि। कहिड़े क़िस्म जा ठीकु आहे? गटर हुजनि, नालियूं हुजनि, अच्छा किना किना खूह हुजनि, मूंखे तरे करे अहिड़ो कयो हिकिड़ो त कयो न साईं, या डडंग कयो डर कयो। असांखे हिते चोपल बि न आहे पातल, पेर हेठि लायो।
केर हेठ मुंह में हणाई थे जमा थी थी केर केर साईं ॻाल्हाइण त ॾियो। चुप कर तूं तुंहिंजी ॿुधी वेंदी इन्वेस्टिगेशन थी साईं हेॾे छो अची असां कहिड़ी इन्वेस्टिगेशन कंदा इलाही इन्वेस्टिगेशन मोतबर आहे 24 कलाक 48 कलाक ड्यूटी हूंदी आहे तव्हांखे ॿार एतिरा कीअं था थी वञनि कान व्हाट्सएप ते ॿार थींदा सत ॻाल्हाईंदा हा वो ॿार पैदा करिणो आहे थी वियो केतिरियूं असां हाणे हिन में चओजे त सवाल करण वारे खे शर्म कोन्हे ऐं ॿुधण वारे खे हया कोन्हे ईमानदार आहे तोखे ठीकु न मिलंदो जहिड़ा सोर्स कराए फीणा तावीज़ कराए पर हुनखे ठीकु मिली वञे त मां जो नकु कटे टेबल ते रख मसइलो इहो उन मथां ते वेठा उन मथां केरु माना छा सेक्रेटरी मिनिस्टर इन्हनि ताईं ॻाल्हि थो वञे इहो तो चाचा न लाभ नथो करे सालो आहे साईं पंहिंजो ये सालो आहे जी साईं एॾो किनो हाणे पाण मर्द किना आहिनि बाक़ी मायूं ठाहियूं पुलिस छाजो शॉर्ट फॉर्म आहे PIP पुलिस पुलिस POLICE पुलिस स्पेलिंग ई आहे पुलिस मां ख़बर हुई मां तोखे चवणु चाहियां हाणे चमाच इनाम ॾियारियो एवार्ड ॾियारियो ऐं असां त पार्टी जा निमाइंदा आहियूं असांजो कमु न आहे तव्हां को त भॼी विया मां पकड़िया फुल फ्राई ऐं हाफ फ्राई तव्हां छा कंदा आहियो गोॾे में चको पैसा ॾेई सोचो भर्ती थींदा फ्री बस चाचा पुट असां मथे ताईं वेंदासीं पोइ इस्लामाबाद निमाइंदो आहे हा रिपोर्टर आहे रोज़ सुबुह जो उथूं त 20 रुपया वधियो 20 रुपया वधियो पेट्रोल न अटो डॉलर वधे थो न जे करे हर शइ महांगी डॉलर तुंहिंजे पीउ जो आहे तुंहिंजे न पीउ धारे वठ ओ अमेरिका में वेठो आहे इंग्लिश सम्झंदो आहे उहो अंग्रेजी में माफ़ी आई एम सॉरी सर चवंदा अरबी में बि या हबीबी गलतन पार्टनर आहे उहो फ्रांस में वेठो आहे एतिरी ॿोलियूं ॻाल्हाईंदे जेके असांजे वॾनि बि न ॻाल्हाइनि मुल्क मां अॼु ॿुधायां थो असां ग़रीबनि जो आहे तव्हां भॼी वेंदव इहो ॿुधायो त डॉलर हाणे आहे घणे जो तव्हांखे ख़बर आहे मां डॉलर ॿुधण नथो मां न कयो मां मूडी न आहे नथो करे मां बाबा तव्हां को माफ़ी घुरऊं था छा छा अञा तव्हांजी मायुनि खां माफ़ी घुरऊं छा लिफाफो खणी आ साहब लिफाफो खणी चल लख रुपए जो तोखे मां माफ़ी घुरां थो बस ये हमारे बच्चे हैं हमारे इलाके के हैं मुगालदा हुआ है और मुगालदा हुआ है कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। The power is here. यूनिक ऐं अव्हां हमेशा जो साथ। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। चॉकलेट लाए? हाँ डिलाइट। वालेकुम सलाम। आजकल बेटे शादी के बाद पराये हो जाते हैं। अरे अम्मा तू तो मेरी रानी है, रानी। अब इस घर में सिर्फ एक ही रानी है। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। सब खां पहिरियां मुकम्मल ॼाण ते बदल ख़बर पूरी ज़िम्मेवारी सां गॾु। अवां जे इशू के भरपूर नमूने पहुचाईंदासीं आला ऐवाननि ताईं। समाज जे विच में थींदड़ ॾोहनि खे कंदासीं वाउ। मोल इशूज़ जी भी थींदी प्रचार। बिना डपडा जे हर वाक़े खे सिधी रीत पहुचाईंदासीं अवाम ताईं। ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़। धरती फ़क़ति अवाम सां गॾु। रानीपुर में फातिमा फरड़ो वाक़े जी मुख्य जवाबदार असद शाह जो रिमांड। रानीपुर में फातिमा फरड़ो वाक़े जे मुख्य जवाबदार असद शाह जो रिमांड पूरो थियण ते
खेस कोर्ट में पेश किया वियो। केस दहशतगर्दी टोड़ अदालत खैरपुर मुंतकिल थियण जा इम्कान। असद शाह जी घरवारी हिना शाह जी अबूरी ज़मानत ख़त्म थियण बाद पुलिस जा मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा। गुज़िरियल ॾींहुं फातिमा फरोड़ जी अमर शबनम पारां पुलिस वटि बयान रिकॉर्ड कराइण खां पोइ असद शाह जे सोहरे फयाज़ शाह जो नालो बि केस में नामज़द कयो वियो। कानून वारो निगरां वज़ीर उमर सुमरो ऐं सिहत वारे वज़ीर ख़ालिद बिन साद फातिमा फरोड़ जे अबाणी ॻोठ पहुची फारसन सां ताज़ियत कंदा ऐं केस में हींअर ताईं थियल अॻभराई बाबति पुलिस ऑफिसरनि खां ब्रीफिंग वठंदा। साफ़ जे खिलाफ़ मां सभिनी जे बारे में नथो चवणु चाहियां। उते मां सॼो वीडियो ठाहे कोन्हे वरी थोरो मां टुकड़ा टुकड़ा वायरल थियल आहिनि। माना जज़्बाती थी वियो आहे मूंखे पंहिंजी मतिलबु ग़लती जेको जज़्बाती थी ॻाल्हायो इहो मूंखे पाण खे बि शर्म थिए थो। राणीपुर में पीर जी औताक ते कट घुराए फातिमा केस में रंडकूं विझण ऐं सहाफ़ियुनि खे धमकाइण वारे केस में गिरफ़्तार। जवाबदार अकबर कल्होड़ो अदालत में पेश। 3 ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले। जवाबदार अकबर कल्होड़ो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मूं जज़्बात में अची सहाफ़ियुनि ऐं पुलिस ऑफिसरनि खे घटि वधि ॻाल्हायो जंहिं ते हू शर्मिसार आहे। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौज़ एजाज़ ऐं आऊं ऐं दुआ भुट्टो नास्रीन हेडलाइंस अवां ॾिठियूं। तफ़सीली ख़बरूं हिन शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। कोका कोला